गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी। राइट। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीसैट 2024 के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। कल हमारा पहला क्लास था, तो कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस 18 तक हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। राइट। आज हम लोग 19th ऑनवर्ड डिस्कस कर रहे हैं। राइट। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। राइट। तो एक बार देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली सेइंग a can X contains 399 liter of petrol and a can Y contains 532 liters of diesel. They are to be bottled in bottles of equal size. Bottles of equal size, so that the pool of petrol and diesel would be separately bottled. Right. The bottle capacity in terms of liter is an integer. How many different bottle sizes are possible? Right. तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास दो कैन है। एक कैन है आपका X, राइट, दिस इज X एंड दिस इज Y, राइट। X एक्चुअली contains, X जो है this actually containing 399 liter of 399 liters of petrol, right, and Y contains 532 liters of diesel, right. So it is to be bottled in bottles of equal size, bottles of equal size, right. So इस केस में हमें क्या करना है, हमें 399 एंड 599 का HCF निकालने का है। ठीक है, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, फिर हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। राइट। सो आप देखें 399 को हम अगर ब्रेक करें तो किस तरीके से कर सकते हैं। 399, राइट, दिस इज 3, राइट, दिस इज एक्चुअली 1 3 3 and this is 7, this is 19. And what about 532? 532 can be actually written as 2, this is 2 6 6, this is again 2 1 3 3 1 3 3 means this is 7 and this is 19. So 399 is nothing but 3 multiplied by 7 multiplied by 19, and 532 is 2 multiplied by 2 multiplied by 7 multiplied by 19. So what is actually HCF? In this case, the 19 is common, 7 is common. So HCF is 7 multiplied by 19. It is 133 liters. So the question is actually asking कि how many bottle sizes are possible. Bottle capacity, what would be the bottle capacity? तो bottle capacity would be 7 liter, 19 liter and 19 multiplied by 7, that is 133 liter, and 1 liter will definitely be one answer, right. 1 liter bottle can actually 339 number of bottles can actually contain petrol, and 5, sorry, this is 532, right.
and 532 bottles of 1 liter size will contain diesel, right? So how many bottle sizes are there? This is actually 1 liter, 1 liter, then 7 liter, then 19 liter, and then 133 liter. So how many different sizes are possible? This is actually 4. Could you get it? Right? So we have actually 399 liter of पेट्रोल एंड 532 लीटर ऑफ पेट्रोल. इनको बोतल इक्वल बोतल साइज में इनको रखने का है, राइट? प्रॉब्लम सिर्फ इतना है. तो 399 और 532 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? दिस इज 7 मल्टीप्लाइड बाई 19 इज 133 लीटर. सो अगर इसमें देखें कि हम 7 लीटर के बॉटल्स में भी दोनों को कंटेन कर सकते हैं, 19 लीटर के बॉटल्स में कर सकते हैं, 19 मल्टीप्लाइड बाई 7 मीन्स 133 लीटर के भी बॉटल में कर सकते हैं, एंड 1 liter will definitely be a answer, right? So how many different sizes are possible? Actually 1 liter, 7 liter, 19 liter and 133 liter. So this is actually good question, और इसको आप एग्जामिनेशन हॉल में अटेम्प्ट जरूर करें, और इसको फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट करें. इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को समझें. ये क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है. इस तरह का क्वेश्चन आई हैव सीन रेगुलरली सीसेट में आता है. तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो एंड कूल. आप इसको बहुत आसानी से समझ के कर सकते हैं, राइट? ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Consider the following a statement in respect of the sum S is equal to x plus y plus z, where x, y, z are distinct prime numbers less than 10. Distinct prime number less than 10. So x, y, z is nothing but x, y, z is actually prime number less than 10. So prime number less than 10 is what? 2, 3, 5 and 7, right? So you have to actually make 3 distinct prime numbers. 3 distinct prime numbers. So there are 4 prime numbers less than 10, that is 2, 3, 5 and 7. So here you have to make combination of 3, right? So how many numbers are possible? That is 2, 3, 5 and 2, 3, 7 and 3, 5, 7 and 2, 5, 7. If that is the case, x, y, z, if that is the case, right, and S is nothing but x plus y plus z. So what would be x? What would be S in this case? This is 10, this is 12, this is 15 and this is 14, right? So what the question is asking for? The unit digit of S is actually can be 0, yes. Can be 9, no. Can be 5, yes. So statement number 1 and statement number 3 are correct. So the correct answer is C, right? So this is actually related with number system, और बहुत ही important है ये. आप इसको प्राइम नंबर को थोड़ा सा आप रिवाइज कर लें, क्योंकि क्वेश्चन प्राइम नंबर से जरूर आता है. इसको आप अटेम्प्ट जरूर करें और इसको कोशिश करें फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट करने का. देखिए इस क्वेश्चन में 2 चीजें हैं जो आपसे ये जानना चाहता है. हाउ मेनी प्राइम नंबर्स लेस देन 10 आर देयर, ये आ गया. एंड देयर आर 4 प्राइम नंबर्स 2, 3, 5 एंड 7. इसमें 3 प्राइम नंबर का हमको सेट बनाने का है. तो वैसे कितने सेट हो सकते हैं? तो ऐसे 4 सेट हो सकते हैं, राइट? 2, 3, 5, 2, 3, 7, 3, 5, 7 एंड 2, 5, 7, राइट? सो सबका अगर आपने सम किया तो इस आपको मिल गया 10, 12, 15 एंड 14. सो द करेक्ट आंसर इज सी. सो दिस इज गुड क्वेश्चन, और
प्राइम नंबर को थोड़ा रिवाइज कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, राइट। और इससे जो क्वेश्चंस होते भी हैं उसको आप 1 से 2 स्टेप में कर सकते हैं। सो इजी है और ये टाइम सेविंग टॉपिक है ये। इफ यू नो प्राइम नंबर तो आप इसको 1 मिनट में कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, 1 से 2 मिनट में। सो आप इसको रिवाइज जरूर कर लें, राइट। चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 24, right? This is actually good question. Consider the sequence. Consider the sequence. A dash B C D dash B B C D A B C dash D A B C, right? That follows a certain pattern. Certain pattern. Which one of the following complete the sequence? तो सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जब कभी भी हो तो इसको 2 स्टेप में करने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्या है, आप इस पूरे उसको देखिए, बी सी डी, देन गैप बी बी सी डी ए बी सी। ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन पेपर पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये मैं चूंकि डिस्कशन के मोड में हूं इसीलिए मुझे ये चीजें अलग से लिखनी पड़ रही है, राइट। सो अब आप इसको काउंट कीजिए कि कितने अल्फाबेट्स इसमें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो ये 20 नंबर्स है। तो 20 को आप 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर सकते हैं। इसका मतलब है ये 5-5 का 4 सेट हो सकता है, राइट। तो 5 नंबर को आप जो 5 अल्फाबेट्स हैं उसको सेट कर लें, 1 2 3 4 5। सो दिस इज 1, राइट। दिस इज 1 2 3 1 2 3 4 5, राइट। दिस इज 1 2 3 4 5, राइट। एंड दिस इज 1 2 3 4 5, राइट। सो अगर आप देखें सेकंड वाले को तो इसमें सिर्फ एक ब्लैंक है, जिसमें अगर आप फोर्थ को देखें तो ए, इट इज स्टार्टिंग विथ ए, एंड फर्स्ट को देखें, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। थर्ड और फोर्थ से, थर्ड फोर्थ एंड फर्स्ट से ये क्लियर हो गया, द फर्स्ट लेटर इज ए, सो हियर इट वुड बी ए, राइट। सो क्या हो गया, सेकंड को अगर आप देखें तो ए वी वी सी डी, राइट। एंड अगर आप फर्स्ट को देखें, सेकंड में 2 बी है तो फर्स्ट में क्या होना चाहिए, 2 ए होना चाहिए, राइट। एंड ए बी सी, तो थर्ड में क्या होना चाहिए, 2 सी होना चाहिए, एंड फोर्थ में क्या होना चाहिए, 2 डी होना चाहिए, राइट। मीन्स ए बी सी डी है, उसमें आप पहले केस में 2 ए कर देते हैं, दूसरे में 2 बी कर देते हैं, तीसरे में 2 सी कर देते हैं, एंड चौथे में 2 डी कर देते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए then C and D then D. It is nothing but C. So this is good question. आप इसको अटेम्प्ट करें और इस तरह के क्वेश्चन को जब कभी भी करना हो पहले टोटल अल्फाबेट काउंट कर लें और उससे ग्रुप बना लें। दिस इज एक्चुअली 5 अल्फाबेट्स एंड 4 ग्रुप्स, ठीक है ना। आपने 4 ग्रुप बनाया, देन यू कुड अंडरस्टैंड द पैटर्न, राइट। सो पैटर्न एक बार आपको समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। इसको आप फर्स्ट राउंड में करें और जरूर करें, राइट। इस क्वेश्चन को करने में आपको 1 मिनट 1.5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज रिलेटेड विथ शेयर्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग, right. So the question is saying 2 person P and Q enter into a business. P puts rupees 14,000 more than Q, but P has invested for 8 months and Q has invested for 10 months. If P's share is 400 more than Q's share out of the total profit 2,000 rupees, what is the capital contributed by P, right? So the make a table. Investment is what,
investment is, and then it is time, right? This is P and this is Q, right? Say Q's investment is X. So Q investment is X and the P investment is X plus 14,000. And P has invested for 8 months. The time is in months, right? This is 8 months and Q has invested for 10 months, right? Then total investment is what? Total investment is, this is 8 into X plus 14,000 and this is 10X, right? And now if P share is 400 more than Q share, right? So the share is, say Q share is A. So this is A and P share is 400 more than Q. This is 400 plus A, right? And total share is 2000. That is 400 plus A is 2000 rupees. This implies A is nothing but 800 rupees. 800. So this is nothing but 800 and this is nothing but 1200, right? So now the question is asking for the total capital contributed by P. See, share is actually investment is proportional to share, right? So here investment is what? 8 into X plus 14,000 divided by 10X. It is nothing but 1200 divided by 800. It is nothing but 3 by 2, right? So this implies 16X plus 16 multiplied by 14,000 is 30X. So this implies 14X is equal to 16 multiplied by 14,000. This implies X is nothing but 16,000. So Q's contribution is 16,000, right? Then P's contribution, that is what question is asking, is 16,000 plus 14,000. It is nothing but 30,000 rupees. That is A. So in this question, you need to actually find out the total investment. Total investment is nothing but the investment for a certain period of time. So total investment is this, and total investment is nothing but it is actually the proportion to the share. So share ratio is 3/2. So their investment would also be in a same ratio. So by solving this equation, you would be getting the value of X as 16,000. Then P's contribution, which is 14,000 plus X, is nothing but 30,000 rupees, right? So this is good question और आप इसको अटेम्प्ट जरूर करें, एंड माय एडवाइस इज दैट इसको आप फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करें, राइट? सो कूल है ये, आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. P's salary is 20% lower than Q's salary, right? Which is 20% lower than R salary. Clear, no? Why? How much percent R salary more than P salary? Right. So P's salary is 20% lower than Q salary, and Q salary 20% lower than R salary. So the question is all asking for the percentage difference between R salary and P salary, right? So say
our salary is rupees 100, right? Then Q's salary is what? Then Q's salary is 20% lower than R salary, means this is R minus 20%, right? R minus 20% means 100 minus 20%. It is nothing but 100 minus 20 is 80 rupees, right? Then P salary is again Q salary minus 20%, right? So this is Q minus 20%. Q is how much? 80 minus 20%. It is nothing but 80 minus 16, that is 64 rupees. So when R salary is rupees 100, then P salary is rupees 64, right? So what the question is asking, by how much percentage is R salary more than P salary? So base is what? P salary. So percentage is what? It is 100 minus 64 divided by 64 multiplied by 100, because base is P salary. P salary is 64. So this is nothing but 36 divided by 64 multiplied by 100. It is nothing but 16 4 25. This is 225 by 4. It is nothing but 56.25%. So it is B, right? This is good question. ये परसेंटेज से जुड़ा हुआ है, आप इसको बहुत ही आसानी से कूली कर सकते हैं. इसको आप फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट करें, राइट? सो माय ओनली एडवाइस इज दैट कि जब इसको अटेम्प्ट करने में, जब कभी भी कर रहे हो, इन कंडीशंस को जो भी इसमें दिया हुआ हो, इसको बहुत ही कुल्ली पढ़ें, राइट? थोड़ा सा इधर उधर मिस इंटरप्रेट करने से आपका आंसर गलत हो सकता है, राइट? सो इसको कुल्ली पढ़ें. क्वेश्चन अच्छा है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दिस इज रिलेटेड विद परसेंटेज, राइट? दिस इज क्वेश्चन नंबर 27. A number is mistakenly divided by 4 instead of multiplying by 4. What is the percentage change in the result due to this mistake? Right? This is again related with percentage. Right? Say the number is 100. Say the number is actually 100. So N1 is what? N1 is 100 divided by 4 is actually 25, and N2 is 100 multiplied by 4, it is nothing but 400. So by what percentage change? So change it. It is nothing but 400 minus 25, it is 375. Then percentage change is what? Percentage change is 375 divided by 400 minus this is multiplied by 100. It is nothing but 375 by 4. It is 93.75%. Right? So the percentage change is what? अगर आप परसेंटेज चेंज की बात करेंगे, स्ट्रेट वे अगर आपको इसको लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं 400 minus 25 divided by 400 multiplied by 100. It is actually percentage change, right? The question is saying a number is mistakenly divided by 4 instead of multiplying by 4. So the percentage change is 400 minus 25 divided by 400 into 100. It is 93.75%.
दिस इज गुड क्वेश्चन और आप इसको अटेम्प्ट जरूर करें, राइट। सो और इसको फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट करें। आप इसको अटेम्प्ट करने के लिए सेकेंड राउंड में भी ना जाएं, बिकॉज ये इसको करने में आपको मुश्किल से 1 मिनट 1.5 मिनट लगेगा। आप इसको फर्स्ट राउंड में ही करें। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली मस्ट अटेम्प्ट वाला कैटेगरी में आएगा, राइट, ठीक है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। इन एन एग्जामिनेशन 80% of students passed in English, 70% student passed in Hindi, 15% student failed in both subject. What is the percentage of a student who failed in one subject? So actually the question is asking for number of a student who failed in one subject, who failed in one subject, right? So इस तरह के क्वेश्चंस को आप वेन डायग्राम से सॉल्व करें। ये बहुत ही आसान मेथड है और ये एक स्टेप में आपको इसका आंसर भी मिल जाता है। क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्किंग फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन वन सब्जेक्ट। सो सी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ students are 100, right? So number of student, number of student, number of students failed in English is what? Is 100 minus 80 is 20%. 20% means 20, right? So number of a student who failed in Hindi is 30%. 70 minus 100 minus 70, it is 30. A number of a student who failed in English and Hindi both, it is 15%. It is 15, right? So use Venn diagram to solve it, right? देखिए this is for English and this is Hindi, right? So number of student who failed, actually this diagram is made for failed students, right? So number of student failed in English is 20, Hindi 30 and both is 15. So this is actually 15 and so this is 5 and this is 15, right? Now the question is asking what is the percentage of a student who failed in one subject. Who failed in one subject is what? It is 5 plus 15, right? It is 20. 20 is how much? 20% in this case. So the answer is B. So this is good question, good question और आप इसको अटेम्प्ट जरूर करें एंड वेन डायग्राम पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। कुछ प्रॉब्लम्स आप किसी भी बुक्स को रेफर करें और सॉल्व कर लें। ये बहुत ही कूल टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? और अगर आपका कॉन्सेप्ट वेन डायग्राम का क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में करें। इट विल नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स। मोर देन 2 मिनट्स में एक्सट्रीम केस में बोल रहा हूँ, राइट? सो दिस इज मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन, राइट? चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 29, राइट? दिस इज क्वेश्चन नंबर 29. This is related with age topic, age, right? A father said to his son, "N years back, I was as old as you are now. My present age is 4 times your age N years back. If the sum of present age of
the father and son is 130 years. What is the difference of their age? So say present age of father is X years and son is Y years. Right. Now read the statement. N years back, I was as old as you are now. N years back, what was the father says? X minus n, it is Y. This is first equation, right? My present age is 4 times, my present age X is 4 times your age n years back into 4 into Y minus n, right? This is second, right? And third is the sum of the present age of, this is X plus 5 is actually 130, right? This is third equation, right? So take the value of n is nothing but X minus Y. So put the value of n into this equation. So this implies X is 4 into Y minus X plus Y is what this implies. हाँ हाँ अच्छा ठीक 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 sorry. So this implies X is 4 into 2y minus X. This implies X plus X plus, this is X plus 4x is 8y. This implies 5x is equal to 8y, right? Right, ठीक है. Now refer this equation number 3. X plus y is actually 130, right? So put the value of x, y is actually 5 by 8, x is 130. This implies 13x is nothing but 8 multiplied by 130. This implies x is 80 years. Once x is 80 years, then y is 130 minus 80 is 50 years. So the difference is 80 minus 50, it is nothing but 30 years, right? So this is A, right? So this is गुड क्वेश्चन और आप इसको जरूर करें. ये 2 स्टेप का क्वेश्चन है, बट माय सजेशन इज दैट कि व्हाइल deriving this equation ना, just be careful, read every statement very carefully. Once your equations are correct, this and this, your answer will invariably be correct, right? So this is good question. आप इसको अटेम्प्ट जरूर करें और इसको आप फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट? ठीक है ना, चलिए ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30. इट इज रिलेटेड विथ यूनिट्स, राइट? So consider the following. 100 liters, sorry, 1000 liters is equal to 1 cubic meter, right? 1 metric ton is 1000 kilogram, and 1 hectare is actually 10,000. हाँ हाँ नहीं
हाँ, अरे ठीक है ना, तो दिस इज 1000 लीटर इज 1 cubic meter, इट इज करेक्ट, राइट, एंड 1 metric ton is 1000 kilogram, it is also correct. 1 hectare is 10,000 square meter, it is also correct, right? So remember these units, right? So, and conversion table, 1000 liter is nothing but 1 cubic meter, 1 metric ton is 1000 kilogram, and 1 hectare is 10,000 square meter. So, which of the above are correct? All three are actually correct. So, correct option is D. So, this is very good question, and इसको attempt करें and units जरूर याद रखें and conversion table. If you actually if you actually know the units and the conversion table, you will be requiring only 10 seconds to actually solve this question. So you can actually attempt this in first round. राइट, क्लियर ना, ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35. व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, दिस इज रिलेटेड विथ नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम हम लोगों ने काफी लंबा डिस्कशन इस पे किया हुआ है. यू कैन रेफर माय एक्चुअली क्लासेस विच इज अवेलेबल इन यूट्यूब. आप एक बार उसको रेफर कर सकते हैं. और नंबर सिस्टम को कभी भी लाइटली मत लीजिए. नंबर सिस्टम से सीसेट में आपको 5 से 6 क्वेश्चंस बहुत ही आराम से आते हैं, इनफैक्ट उससे ज्यादा, राइट. सो आप इसको देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है. लेट एक्स बी ए टू डिजिट नंबर. x बी ए 2 डिजिट नंबर, हमने 2 डिजिट इसको p और q ले लिया, राइट. एंड y be another 2 digit number formed by interchanging the digits. So y is what? It is q p, right. If x plus y is the greatest 2 digit number, then what is the number of possible values of x, right. So it can be written at 10p plus q, right, and it can be written as 10q plus p, right. Then x plus y is what? X plus y is 11p plus 11q. As per question, it is nothing but greatest 2 digit number. Greatest 2 digit number is 99. So this implies 11 into p plus q is 99. So p plus q is actually 9, right. P plus q is 9. So what the question is asking, what is the number of possible values of p? Possible values of p is actually dependent on p and q. So what? P plus q is 9. So what would be the combination of p and q? P and q, right. This is actually 1 8, then 2 7, then 3 and 6, and then 4 5, right. Then 5 4, then 6 3, and then 7 2, and then 8 1, right. So there are 8 numbers of p and q. So how many possible values for x? It is nothing but 8, right. There would be 8 numbers, right. 18 27 36 45, then 54, then 63, then 72 and 81, right. There are 8 possible values of x, right. So this is good question. ये बहुत ही अच्छा कूल क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट जरूर करें
और इसको आप फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको अगर थोड़ी दिक्कत भी हो रही हो तो आप नंबर सिस्टम में जो हमारे ट्यूटोरियल जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इस चैनल पे ही वो है हमारे प्लेलिस्ट में, आप उसको देख सकते हैं। आप उसको एक बार देख लीजिए। 3 लेक्चर्स या 4 लेक्चर्स हम लोगों ने लिया था और उसमें सारा कॉन्सेप्ट आपका नंबर सिस्टम से क्लियर हो जाएगा, रिलेटेड जो भी है, ठीक है ना। सो राइट, दिस इज गुड क्वेश्चन, आप इसको जरूर से अटेम्प्ट करें। राइट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। Consider the following. Weight of 6 boys is equal to weight of 7 girls is equal to weight of 3 men is equal to weight of 4 women. Right? 4 women. So if the average weight of women is 63 kg, then what is the average weight of boy? Right? So 6 boy is equal to 7 girls is equal to 3 men is equal to 4 women, right? So the average weight of women is 63. Then what is the average weight of boy? So woman and boy, this is boy and this is woman. Then 6b is equal to 4w, right? So here 4 multiplied by 63 is equal to 6b. This implies v is nothing but 4 multiplied by 63 divided by 6, right? 3, 21, this is 2, 2, this is nothing but 42. So correct answer is B, 42 kg. This is actually related with topic average और ये कूल है, आप इसको एक बार पढ़ लें और कुछ क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर लें, राइट? किसी भी टेक्स्ट बुक को रेफर करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कूल रहता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, राइट? सो दिस इज गुड क्वेश्चन और आप इसको अटेम्प्ट करें और कोशिश कीजिए कि इसको आप फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट कर लें। इट विल नॉट टेक मोर देन ए मिनट टू सॉल्व इट, राइट? क्लियर ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many times the hour hand and the minute hand coincide in a clock between 10 a.m. and 2 p.m. same day, right? So this topic is related with clock and it is very important. At least 1 से 2 क्वेश्चन तो हर साल होता ही होता है इससे, राइट? एंड देयर इज ओनली वन फॉर्मूला, सी angle between hour hand and minute hand, right? This is h at hm, right? It is theta is 30 h minus 11 by 2 m, right? 30 h is equal to 30 h minus 11 by 2 m, right? Now the question is actually asking how many times this hour hand and minute hand will coincide between 10 a.m. to 2 p.m. So case 1, take h as 10 and theta is 0. This implies 0 is 30 multiplied by 10 minus 11 by 2 m, right? So this implies m is what? M is 30 multiplied by 10 multiplied by 2 divided by 11, right? So it is actually nothing but 600 divided by 11 is 5, 10, this is 54 minutes.
So at time 10:54 a.m. both hour hand and minute hand will coincide, right? Then 2, take h as 11 and theta is 0. This implies 0 is 30 multiplied by 11 minus 11 by 2 m. This implies m is nothing but 2 multiplied by 30 multiplied by 11 divided by 11. It is 60 minutes. Means at 12 they will actually coincide, right? So, and third case is take h as 12 and theta as 0, right? So this is 0, it is 12 multiplied by 30 minus 11 by 2 m. This implies m is what? 12 30 multiplied by 2 divided by 11, right? So it is what? 720 divided by 11. It is, right? So it is nothing but 666 and 665 minutes. So at around 1:05 p.m. they will again coincide. So how many times they are coinciding between 1 and 2, right? At 10:54 a.m., then 12, and then 1:05 p.m. So 3 times they will be coinciding. So this equation is, this formula is very important. आप इसको याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, और 1 से 2 मिनट में आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस इज गुड क्वेश्चन, आप इसको अटेम्प्ट जरूर करें, और इसको फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट करने की प्लानिंग करें. दो ऐसा लग रहा है कि इसमें 3 स्टेप है, बट ये पहला, अगर आपको ये इक्वेशन याद है, ये फॉर्मूला याद है, तो उसके बाद इसको सॉल्व करने में आपको कोई टाइम नहीं लगेगा, आप तुरंत से खट से कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट? चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. यस, द कैलेंडर फॉर year 2025 is same for which year? See, this topic is actually related with calendar, right? कैलेंडर में सिर्फ आप इतना याद रखिए कि एवरी लीप ईयर एक्चुअली generates 2 odd days, and every non-leap year generates 1 odd day, right? Calendar should be same. मीन्स क्या हुआ, अगर आप बात कर रहे हैं 125, सो क्या है कि अज्यूम कि 1/1/25 को अगर मैं मानता हूं कि 1st of January 25 इज एक्चुअली टी डे, एनी डे इट इज टी डे, राइट? सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा साल होगा जिसका 1/1 ऑफ दिस ईयर is either t or plus t plus 7 day. मीन्स जो ऑड डे का गैप है, अगर वो 7 या 7 के मल्टीपल में आ जाएगा तो हम बता देंगे कि यस, फिर 25 एंड दिस ईयर का कैलेंडर बिल्कुल सेम हो जाएगा, राइट? सो चलिए देखते हैं इसको. सो 1/1/25 इज टी डे, राइट? So 1/1/26 would be t plus 1, right? And 1/1/27 would be t plus 2, and 1/1/28 it would be t plus 3. देखिए 28
जो है वो लीप ईयर में आता है, लेकिन हम 1 जनवरी की बात कर रहे हैं, तो इसके लीप ईयर का जो इफेक्ट होगा वो नेक्स्ट ईयर आएगा। 1129 would be t plus 3, this is t plus 3 plus 2, it is nothing but t plus 5, right? And 1130 would be 1130 would be t plus 6, right? And then 1131 it is nothing but t plus 7. So अब आपको यहाँ पे t plus 7 मिल गया. So it is evident that 1125 and 112031 would be having same calendar, right? So calendar का ये दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिए. ऑड डे अगर 7 या 7 के मल्टीपल में हो जाता है तो दोनों सेम हो जाते हैं, राइट? सो हमें इसमें ऑड डे को निकालना होता है. दिस इज गुड क्वेश्चन. कैलेंडर को जरूर आप रिवाइज करें, कुछ क्वेश्चंस उसके जरूर करें. बहुत टफ टॉपिक नहीं है ये, बट इसको समझना बहुत जरूरी है. और इस तरह के क्वेश्चंस को आप एग्जामिनेशन हॉल में अटेम्प्ट करें और इसको फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट करने का प्लान करें, right? So this is good. So here we are actually we have completed the question up till 38. So आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे. तब तक आप लोग सीसेट में प्रैक्टिस जरूर करते रहिए. प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. अपने टाइम का और अपने एनर्जी का ऑप्टिमम पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करें, राइट?